Hello friends, welcome back to my channel English with Anita. I hope you people are doing great and learning English language great way. So before I start sharing with you people something related to English, I want to let you know that this video is going to be very short because of lack of time. It's evening, sun is about to set, and if I continue or if I try to stretch this video little longer, so my face won't be visible, and that is why I need to wrap up this video as early as possible. So many people they ask me how to speak English like you, आपके जैसा इंग्लिश कैसे बोलें. So if you want to speak this language like me, there is one thing you need to do, that is practice. Yes, you heard me right. If I tell you, so I have been practicing for a long time, and there is one thing, I am very consistent. Throughout my journey, I have been consistent. So that is also a major thing that makes me to speak this language. But other thing that I have given a lot of time. So in your case also, if you want to speak this language, you need to start practicing. आपको क्या करना चाहिए? आपको प्रैक्टिस करना चाहिए. सुनने की प्रैक्टिस, रीडिंग करने की प्रैक्टिस, और अगर आपका ग्रामर क्लियर ना हो तो ग्रामर पढ़ लीजिए थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, बस बेसिक. उसके बाद बोलने की प्रैक्टिस करिए. ठीक है? इट डजंट नीड much thing to speak this language, but yes, it takes time, and you don't have to be bothered that when you will get fluency. No, just focus on your practice. Don't count time also, or don't count hours, because if you like this language or love this language, maybe you should not count time, that much. Just involved in the practice or immerse in this language if you want to become a fluent English speaker. But I have seen many people, they get impatient. They want to speak this language within 1 month, or if it's possible overnight also. But my friend, it is a language. यही एक लैंग्वेज है, और कोई भी लैंग्वेज अगर आप सीखना चाहें तो टाइम लगता है. ओके, सो अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं फ्लुएंटली, तो आप कितने घंटे प्रैक्टिस करते हैं उसको छोड़िए. जस्ट आपको प्रैक्टिस करने पे फोकस करना चाहिए. अगर आप इस लैंग्वेज से लव करते हैं, और मे बी इफ़ यू लाइक दिस लैंग्वेज, सो you will definitely become a fluent English speaker, and I know for sure you will not count time, or maybe you will not get impatient also. Yeah, I would say one thing, that when I was a beginner, I used to get impatient. मुझे भी ऐसा लगता था कि मैं कब फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बनूंगी, मैं कब इस लैंग्वेज को फ्लुएंटली बोलूँगी. पहले महीने में लगा कि मैं एक फ्लुएंट स्पीकर बन गई हूँ जब मैं थोड़ा थोड़ा बोलने लगी थी. बट इट्स बीन सो लॉन्ग, एंड नाउ आई रियलाइज्ड दैट नो, दैट वाज नॉट फ्लुएंसी, एंड स्टिल आई एम नॉट so fluent. I haven't got fluency yet. I need to work hard. I need to be consistent for being more fluent. So जब हम बिगिनर होते हैं, जब हम इस लैंग्वेज को बोलना शुरू करते हैं, तो जब हम थोड़ा थोड़ा बोल लेते हैं ना, तो लगता है कि हम फ्लुएंट हो गए हैं. बट माई फ्रेंड, देयर आर अ लॉट ऑफ एस्पेक्ट्स ऑफ दिस लैंग्वेज वी नीड टू वर्क ऑन. जस्ट लाइक if you can little bit speak this language, then you need to work on pronunciation. Actually, when I was in my school, I didn't get that much clarity about sh and sa. Okay, I used to say sa, and when I started learning English language, I came to know that both they have
the different pronunciation. So then I started pronouncing sh and sa. So I didn't know really, because no one told me, or I didn't pay that much attention when I was in my school. So there are a lot of words, there are a lot of letters. We need to work on them to speak this language fluently. There are a lot of things to work on, not only knowing the words and just speaking. No, how to speak this language fluently, we need to work on many aspects. अगर आप एक बिगिनर हैं तो आप इस चीज़ को समझ भी नहीं पाएंगे, आप सोचेंगे नहीं मैं 1 महीने में फ्लुएंट होकर दिखाऊंगा और दिखाऊंगी, बट ऐसा नहीं होता है, ये पॉसिबल ही नहीं होगा। आप इस लैंग्वेज को बोल लेंगे बट कहीं ना कहीं आप मिस्टेक करेंगे। वो प्रोनाउंसिएशन हो सकता है, वो ग्रामेटिकल मिस्टेक हो सकता है, ठीक है। अगर आप पहले से जानते हैं कुछ, तब तो चांस है कि आप इस लैंग्वेज को बोल पाएंगे, बट अगर आपको थोड़ा भी जानकारी नहीं है इस लैंग्वेज के बारे में तो आप बहुत सारा मिस्टेक करेंगे, ठीक है। फिर क्या होता है, लोग चैलेंज लेते हैं कि हम 1 महीने में बोलेंगे और बोल के दिखा देंगे और फ्लुएंट होकर दिखा देंगे। ऐसा नहीं है, यह एक लैंग्वेज है और टाइम लगता है, ठीक है। By thinking so, we should not avoid practice. We need to practice and do hard work. If we want to become a fluent English speaker, we need to practice every single day. हमें डेली प्रैक्टिस करना चाहिए, ठीक है। जब हम बिगनर होते हैं कुछ चीज़ों को हम समझ ही नहीं पाते हैं। जब मैं बिगनर थी मुझे लगता था कि मैं परफेक्टली इस लैंग्वेज को बोल पा रही हूँ, ठीक है। जब मैंने 2-3 महीने इस लैंग्वेज में स्पेंड कर लिया था, फिर अब रियलाइज़ होता है कि नो, I was not fluent, okay. It was just like my thinking, or I had never ever explored this language that much. But I'm happy because I was very new to this language and I didn't have idea about this language much initially. That is why it took time to understand, and I can understand. You may be getting impatient. आपको भी लगता होगा कि कितना टाइम लग रहा है, कब मैं फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बनूंगा और बनूंगी, ऐसा लगता होगा। और एक ऑब्वियस है, ऐसा होना भी चाहिए क्योंकि आपने कभी इस लैंग्वेज को सीखा नहीं था, ठीक है। तो एज ए नोविश लर्नर आपके साथ ऐसा हो सकता है, बट इट्स ओके। एंड हाउ यू कैन डील विद दिस सिचुएशन? बाय वॉचिंग अदर्स। इफ़ यू सी सम यूट्यूबर्स, they have been making videos for a long time. It means they have been making videos for maybe 5 years, 3 years, 6 years, 10 years, and they may have learnt before. So if you count their time, then it will be a lot. Then compared to their time, you have just spent few months or few days, okay. That is why you are unable. So don't get disappointed. You will definitely speak this language like me or like anyone, okay. Just practice, just focus on practice, okay. And don't get impatient, because I believe in you. You will be able to speak this language. So I wanted to share this thing. There were many things that I wanted to share with you, but at this moment I'm not getting any point, and plus the sun has already set also, okay. So I need to wrap up my video here. Whatever information are left, I will definitely share in my upcoming videos. So I hope my video is little bit helpful for you people. If it is, then please like, share, subscribe. We'll meet in the next video. Till then, take care. Bye bye. Have a nice day.